ओके हाय दोस्तों। आज हम CompTIA A+ ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ये ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड बाय ए यूट्यूब चैनल जेस टेक एंड सिक्योरिटी स्पॉन्सर्ड बाय लोयल टेक एंड सिक्योरिटी। एनी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो बिजनेस के बारे में और एनी अदर ट्रेनिंग्स यू कैन ऑलवेज विजिट दिस वेबसाइट टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो चलें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 which is about working with Windows 8 or 8.1. Chapter number 15 is related to only Windows 8.1. हमारे पास लैब है आपको दिखाने के लिए 8.1 पे, तो वी आर गोना डू साइड बाय साइड 8.1 की हम थ्योरी एंड मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर उसका जो लैब है वो भी साथ में बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है विंडोज़ 7 का है एंड देन दी चैप्टर आफ्टर दैट वी विल कवर विंडोज़ 10। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड रिमेंबर दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द CompTIA ट्रेनिंग। इसके अंदर हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे उसके वेरियस फीचर्स, उसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल विंडोज़ पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हम अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव इन पर्सन जो ट्रेनिंग होगी उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन भी करेंगे। ठीक है, नाउ विंडोज़ 8 जो है वो विंडोज़ 7 के बाद आया था, बट इन दिस ट्रेनिंग they are basically um, giving us an overview of Windows 8, then Windows 7. Okay, and the idea is they're actually going from the latest to the oldest. But since Windows 8 is not latest anymore, what I'm going to do is I'm going to just continue Windows 8 and I will show some Windows 7, and then इस ट्रेनिंग के अंदर दे आर कवरिंग विंडोज़ विस्टा विच आई एम नॉट गोइंग टू कवर। इंस्टेड मैं विंडोज़ 10 कवर करूँगा बिकॉज दैट इज़ मोर रेलिवेंट फॉर दीज डेज। ठीक है, सो फॉर विंडोज़ 8 उसके 4 एडिशंस निकले थे। विंडोज़ 8 कॉमनली कॉल्ड कोर, फिर विंडोज़ 8 प्रो था जो कि सिमिलर था विंडोज़ 7 प्रोफेशनल एंड विंडोज़ 7 अल्टीमेट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स उसके सिमिलर थे। विंडोज़ 8 एंटरप्राइज जो बेसिकली वॉल्यूम लाइसेंसेस के उसके ऊपर यूज़ होता है। बिग कंपनीज हु अपने अपने कंप्यूटर्स जो है वो डोमेन के अंदर ज्वाइन करते हैं, सो इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर दैट। देन विंडोज़ 8 RT फॉर प्री इंस्टॉलेशन ऑन टैबलेट्स। So Windows RT जो है basically is installed on the tablets for touch screen। अगर आपको पता हो Windows 8 जो है they came up with the tiles, वो आपको next screen में पता चलेगा in what the tiles mean, but they tried to Windows 8 को they tried to make it a user friendly for touch screen devices. Windows Microsoft ka, the idea was that they're going to move everything to touch screen. That's the reason why they came up with the tile feature. Now, so all of the versions include the start screen, desktop, Windows Store, secure boot, and drive encryption. ये विंडोज़ 8 के अंदर सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं, बट वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट स्क्रीन एंड डेस्कटॉप look is changed. Now only the Pro and Enterprise version supports BitLocker and encrypting file system which is EFS. BitLocker जो है वो खाली Pro और Enterprise के जो इनके editions हैं only supported in those versions. BitLocker encrypt कर देता है आपके पूरे ड्राइव को या आपके पूरे फोल्डर को या फाइल को, whatever you want. ये है Windows 8 का user interface. If you remember, when you click on the start button, you would see this interface.
ना मैंने आपको बोला था मैं साइड बाय साइड आपको ये भी दिखाता रहूँगा कि हमारे पास विंडोज़ 8 है. लेट्स स्केल इट. तो ये विंडोज़ 8 है. यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है विंडोज़ 8.1 प्रोफेशनल प्रो. व्हेन आई क्लिक ऑन द स्टार्ट, as you can see ये tiles मुझे शो करते हैं. This is an interface for the tiles. It may lag a little bit because ये VPN के through चल रहा है, so it may lag a little bit, but it will give you an idea what we are looking at. ठीक है. We click on desktop and then ये desktop show करता है. All right. Features. उसके अंदर Metro UI feature they call it. Now it's called Windows UI user interface. उसके अंदर पिनिंग का एक ऑप्शन होता था. टास्क बार के अंदर वी कैन स्टार्ट पिनिंग द आइकॉन्स. वन ड्राइव का भी फीचर आया है. वन ड्राइव विच यू कैन कनेक्ट your OneDrive and upload all your documents to the OneDrive cloud. Windows stores to download more apps. विंडोज़ स्टोर के अंदर आप अलग अलग किस्म की एप्स डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि Windows 8 was a transition from Windows 7, which was a regular desktop, and Windows 8 was a tryout for a tablet slash app type versions. Technically, they were trying to copy iOS. Multi-monitor taskbar. ठीक है. दोनों मॉनिटर के अंदर आपको टास्क बार शो करते हैं विंडोज़ 8 में. चार्म्स है. स्टार्ट स्क्रीन. टाइल लुक. जैसे मैंने अभी दिखाया आपको टाइल लुक है. पावरशेल. .NET स्क्रिप्टिंग. पावरशेल भी इंट्रोड्यूस हुई इसके अंदर विंडोज़ 8 में. हम आगे जाके देखेंगे पावरशेल क्या है. लाइव साइन इन. सिंगल साइन ऑन. सिंगल साइन ऑन बेसिकली इट्स आल्सो नोन एज SSO. सिंगल साइन ऑन बेसिकली ये होता है कि आप एक चीज़ के अंदर लॉगिन हो जाएं और आप उसी चीज़ के अंदर से कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो you do not have to log back into that. It automatically signs you in. So that is why it's called single sign on. ठीक है. And then they came up with the Action Center as well. Action Center जो है it's a central dialogue for dealing with problems, security and maintenance. Control panel के अंदर है ये system admin, system and security. So let's take a look at that real quick. We will go start. मुझे control panel नहीं दिख रहा है. I can just start typing control and then it will show me here control panel. And then it says go to system and security. So let's see, where is system? Right here. And Action Center right here. Or ये Action Center के अंदर we can change settings if you like. So again, basically what Action Center is, it's a central dialogue for dealing with problems, security and maintenance. यहाँ पे आपको Windows की तरफ से ये central management है. कुछ भी कंप्यूटर में issue होता है, it will report to you here. There are few other places you can take a look at too, but for now this is the one they are mentioning. ठीक है. Windows PowerShell. This is Windows PowerShell. This is greatly enhanced compared to the command prompt. So because the command prompt has some limitations, PowerShell is designed in .NET programming framework. So you can, आप इसके अंदर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं. आप पूरा का पूरा विंडोज सर्वर ये PowerShell के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, वेयर आपको यूज़र जो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसकी भी ज़रूरत नहीं है. So PowerShell is
is similar to Linux, where आप Linux से you can run the entire system, but the commands are different, obviously, because ये PowerShell is designed on a different platform, but the concept is the same. और ये एक्शन सेंटर है जो कि मैंने अभी आपको बताया. यहाँ पे आपको सब बता देता है. Let's take a look at it one more time. यहाँ पे मुझे सब बता देता है कि भाई सिक्योरिटी के अंदर ये इशू है. लेट्स सी मेंटेनेंस के अंदर क्या है. Maintenance, but nothing is showing up, so that's good. Okay, I see it says okay right here, so that's good. Drive status is good. तो ये बेसिकली आपको सिक्योरिटी के सारे इश्यूज और मेंटेनेंस के सारे इश्यूज यहाँ पे ही बता देता है. It's telling me turn on Windows Smart Screen. Windows Smart Screen can help keep your PC safer by warning you before running unrecognized apps and files downloaded from the internet. तो बेसिकली इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी फीचर. यू टर्न इट ऑन एंड इट विल वो आपको बताएगा कि द सॉफ्टवेयर ट्राइंग टू रन इज नॉट सिक्योर. So that's what they are trying to show here. Action Center basically shows you all the details in one place. Now navigating Windows 8 start screen. As I said, navigation जो है touch screen started with Windows 8. They came up with a side view button. अगर आप hover करेंगे अपने mouse को on the right hand side or a left hand side, you will see some type of a menu. And then उसके अंदर अलग से options होता है where you can swipe from right edge of the screen. Let's take a look. This is not a touch screen, so I'm going to try to do this with mouse. So I'm going to move my mouse here. Hopefully it will show me something. Okay. There we go. तो माउस से थोड़ा डिफिकल्ट है, बट विद अ टच स्क्रीन आप खाली स्वाइप करेंगे and then you will see that. So as you can see, I went on the top corner and it gave me this menu option. यहाँ से आप you can do search, you can do device settings, time भी show करता है. So that's what they came up with Windows 8. These options were ज़्यादा hit नहीं हुए Windows के अंदर, so they did not really last long. Okay, then display the start menu. Tap the desktop tile and then press and release the start button. जैसे वो छोटा सा बटन है start का, वो आप दबाएंगे तो वो tiles आपको शो करना शुरू हो जाएंगे. अगर आपको keyboard and mouse यूज करना है, point to the lower left corner of the start screen to display the start button and then right click it. तो same thing. अगर आप mouse यूज करते हैं, so you can click on this button and it will show you. अगर माउस नहीं है, आपको टच स्क्रीन है, you can just touch on this and then it will show you the same menu. Swipe to the left until the down arrow appears and then tap the arrow in the lower left corner of the start screen. A list of apps will appear by name in alphabetical order. अगर आपके पास टच स्क्रीन है, so you can swipe to the left until down arrow आता है. उस down arrow पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी एप्स वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर शो कर देगा. अगर आपको कीबोर्ड या माउस यूज करना है, यू कैन डू पॉइंट टू द लोअर लेफ्ट एरिया of the start screen and then click the down arrow. So let's try that with the mouse. Because I'm on a virtual system, it may be a little bit hard. Okay, ये virtual system के अंदर it's a little bit hard because every time I try to do it, the mouse goes out of the screen, so it may be a little difficult. But ये जो corner है ना,
if you have like Windows 8, you can try that. इस corner के अंदर आप जाएंगे, you will get the arrow and then you can get the apps. Another way of doing that was right here. So मैंने directly arrow पे click नहीं किया है. I clicked on start first. But what they are saying is that you can click directly on the arrow, but in virtual system it's not working properly. So as you can see, this ये सारे apps list कर रहे हैं जो कि installed है, और they're all alphabetical orders. N O P Q से कुछ नहीं है, R S T V W whatever, right? हमें वापस जाना है. We can just click on the up arrow and ये screen आपको वापस show करेगी. You can click on the desktop to go back onto the desktop. अच्छा, Windows 8 के जो upgrade options हैं from Windows 7 वो क्या क्या है? अगर आपके पास Windows 7 starter version है edition, तो आप Windows 8 के core and professional में upgrade कर सकते हैं with a product key. आप Windows 8 Enterprise को upgrade नहीं कर सकते हैं. ये Enterprise level के Windows होते हैं, has more features in it. Windows 7 Home Basic अगर आपके पास है तो आप अगेन कोर एंड प्रोफेशनल ले सकते हैं, एंटरप्राइज नहीं ले सकते हैं. विंडोज 7 होम प्रीमियम है अगर आपके पास, तो अगेन यू कैन हैव कोर एंड प्रोफेशनल बट नॉट द एंटरप्राइज. अगर आपके पास विंडोज 7 प्रोफेशनल है तो यू हैव प्रोफेशनल, यू कैन नॉट डाउनग्रेड टू कोर, बट आप अपग्रेड कर सकते हैं एंटरप्राइज तक. विंडोज 7 अल्टीमेट अगर आपके पास है तो वो प्रोफेशनल में आप अपग्रेड कर सकते हैं या डाउनग्रेड, पर आप एंटरप्राइज में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम, अनलेस यू डू ए क्लीन इंस्टॉलेशन. रिमेंबर, हम वी नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंस्टॉलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एन अपग्रेड ऑप्शन. विंडोज़ जो है उन्होंने एक फीचर निकाला था कि आप अपने पुराने सिस्टम से डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं विद ए, इट्स कॉल्ड एन अपग्रेडेबल की, अ प्रोडक्ट की. When you enter that key, it will upgrade your system from Windows 7, whichever edition you have, to the appropriate next level edition. अगर आपके पास Windows 7 Enterprise है, then you can stay there, but you cannot downgrade. Windows Enterprise is one of the most expensive ones. Now, methods used to install Windows. 3 methods होते हैं इसके अंदर. I mean actually 2. One होता है clean. जैसे मैंने अभी बताया, क्लीन जो होता है बेसिकली नोट, उसके अंदर कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ट्रेसेस बाकी नहीं रहते हैं. क्लीन का मतलब ये है कि हम पूरे हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं और फिर नए सिरे से नया विंडोज़ जो भी हो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10 व्हाटएवर, वो हम इंस्टॉल करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड ए क्लीन मेथड टू इंस्टॉल विंडोज़. सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है अपग्रेड. सो अपग्रेड के अंदर क्या होता है, ट्रेसेस फ्रॉम ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लेफ्ट, सच एज यूजर अकाउंट्स, डेटा और ऐप. ये सब उसके अंदर रह जाता है. जब हम लाइव अपग्रेड और या क्लीन इंस्टॉलेशन करेंगे, आई विल शो यू दैट ऑप्शन, जिसके अंदर इट विल गिव यू एन ऑप्शन फॉर अपग्रेड और क्लीन इंस्टॉलेशन, आइदर और. ठीक है. Now, since Windows RT 8 is designed for pre-installation on tablets, there is not an upgrade path for it. जो Windows RT है, जो कि tablets के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो upgradable नहीं है. अगर आप सोचें कि मैं उसको Enterprise या Windows 8 Professional में upgrade कर दूं, that's not gonna be possible because वो operating system is only designed for the tablets. काफ़ी ऐसे टैबलेट्स भी अभी भी आते हैं जो Windows 8 रन करते हैं, but you are not able to upgrade that unless you do a lot of jailbreaking and stuff. There's always a way to do these things, but um, it's not sustainable. Or one of the example is Windows 11. Like Windows 11 currently, आज की तारीख में, okay, बाद में it may work, but आज की तारीख में Windows 11 does not work on a hypervisor. वो हम आगे जाके I'll show you what all that is, but just to give you a little bit of an update on that. Okay, ये है वो अपग्रेड असिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा था. ये अपग्रेड असिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली विंडोज़ के सिस्टम के अंदर से ही आपको मिलता है. 2 किस्म के होते हैं. एक तो
अपग्रेड जो है आपको यू गेट दैट अपग्रेड डायरेक्टली फ्रॉम दी विंडोज़, और सेकेंड अपग्रेड जो होता है वो डॉस से आता है, कमांड प्रॉम्प्ट से। तो ये वाला जो आप अपग्रेड देख रहे हैं, यहाँ पे आगे जाके वो आपसे प्रोडक्ट की मांगेगा कि भाई आपके पास विंडोज 8 कोर है, आपको प्रोफेशनल डालना है या अपग्रेड करना है, तो प्रोवाइड दी प्रोफेशनल अपग्रेड की सो दैट वी कैन अपग्रेड इट फॉर यू। फिर वो सर्च करता है कि व्हाट is this computer upgradable or not. 39 of your apps and devices are compatible. 4 items are for your review. You will need to reinstall your compatible apps and devices in Windows 8. तो ये बोल रहा है कि 39 apps जो है वो तो चलो अपग्रेड हो जाएगी, 4 जो है वो शायद हो शायद ना हो, आपको रिव्यू करनी पड़ेगी, और जितनी भी रीइंस्टॉल नहीं होती हैं ऐप वो आपको फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो ये सब आपको बता देता है अपग्रेड करने से पहले, ताकि यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। So when it comes to software, the easiest way to see if your current apps work with Windows 8 is to visit the Windows Compatibility Center at the address. I will आप गूगल के अंदर जाके if you can type in Windows 8 compatibility Windows 8.1 compatibility center, so it will give you the details. Let me see if I can copy that for you. So this is the link right here. सो ऑब्वियसली ये विंडोज़ 11 के बारे में बता रहा है अभी कि विंडोज़ 11 की compatibility थी, but we are talking about Windows 8 right now. I'm not sure if they will still show. Windows 8 is actually not even supported anymore, but खैर जो भी है, यही जो मैंने आपको लिंक बताया वही लिंक के ऊपर आपको सारे विंडोज़ के शो करेंगे, whichever is supported still by Microsoft. Currently it's showing Windows 11 and Windows 10, ठीक है ना? Windows 10 के जो अलग अलग flavors हैं, it's showing that, so you can get that compatibility list, or जो असिस्टेंट है आपका उसी के अंदर वो आपको बता देगा कि भाई आपकी ये चीज़ जो है ये चीज़ है कंपेरेबल है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। Unattended installation, image deployment. An unattended installation, you don't need to be sitting in front of the machine to complete the operation. The image deployment is copying an ideal image over from one machine to another using tools like Windows ADK or Symantec Ghost. So unattended installation is exactly what it's written. ऐसी इंस्टॉलेशन जो कि आपको उस कंप्यूटर के अंदर इन पर्सन होने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ यूजुअली डन थ्रू ए नेटवर्क। अगर मैं लोकेशन नंबर ए में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोकेशन नंबर बी के अंदर हम विंडोज़ को अपग्रेड करें, तो वो मैं नेटवर्क के थ्रू भी कर सकता हूँ। there's several protocols work for that, but just to give you a quick idea, नेटवर्क बेस के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड Symantec Ghost also has that capability. But जो image deployment है, what that does is that let's say हमारे पास दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B. Now हम चाहते हैं कि कंप्यूटर A का जितना भी इमेज, जितना भी डेटा, जितने भी एप्स, जितनी भी फाइल्स, यूज़र अकाउंट्स, एवरीथिंग एग्जैक्ट कॉपी मुझे चाहिए कंप्यूटर नंबर ए की इनटू कंप्यूटर नंबर बी, एग्जैक्ट कॉपी मुझे चाहिए। तो what I would do is I would create an image. Usually an image is created as an ISO. वो image हम जब create करेंगे, then we can copy that. Inshallah I will show you that in practical. But let me see if I have.
Rufus. These are all the ISO image burners. Well, मैं आपको एक quickly ये बता देता हूँ. There is another one called, and it's free for personal use. जो सिमेंटिक गोस्ट करता है वो सेम चीज़ ये भी करता है. मैक्रियम रिफ्लेक्ट. ओके, बेसिकली ये क्या है, आप इसको कंप्यूटर के ऊपर जो भी कंप्यूटर आपको कॉपी करना हो आप उसके ऊपर इसका सॉफ्टवेयर रन करो. फ्री वर्जन भी था इनका, मैंने पीछे देखा था अभी. सी फ्री क्लोनिंग. तो पूरा का पूरा ये विंडोज़ कॉपी कर लेगा. फिर let me see if I even have this. No, I don't have it. So ये पूरा का पूरा इमेज कॉपी कर देगा और वो आपको यूएसबी पे दे देगा या सीडी के ऊपर दे देगा. फिर ये आपको एक देगा रिमूवेबल मीडिया. ये मीडिया देगा जो आप अपने सिस्टम में डालेंगे. इट कुड बी अ सीडी और इट कुड बी अ फ्लैश ड्राइव, लाइक अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव. वो होगी बूटेबल. तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो आप डालेंगे और विंडोज़ को अपने सेकंड कंप्यूटर पे विंडोज़ नहीं कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो ये मैक्रियम रिफ्लेक्ट बूटअप हो जाएगा. बिकॉज रिमेंबर सेकंड कंप्यूटर में तो आपका कोई विंडोज़ नहीं है. वो इट्स एम्प्टी, राइट. यू आर ट्राइंग टू कॉपी everything from computer number A to computer number B, and in order to do that you need an ISO image. तो ये मैक्रियम रिफ्लेक्ट इस जो है वो CD प्रोवाइड करेगा या USB. You will be able to boot up with the Macrium Reflect operating system which is based on Linux. And then वहाँ से जो भी आपने बैकअप क्रिएट किया था you can pull that entire image into your new computer. And from that point forward वो सारा का सारा वैसे ही कॉपी करेगा जैसे आपके कंप्यूटर नंबर A के अंदर है. So this is called cloning, or this is also called imaging. Most of the help desk के अंदर आप लोग ये काफ़ी करेंगे. इमेजिंग जो है इट्स आपके पास 100 कंप्यूटर्स होते हैं. तो हाउ डू यू नॉट गोना गो टू ईच कंप्यूटर एंड इंस्टॉल विंडोज़, इंस्टॉल एंटीवायरस, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. कितने अलग 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 सॉफ्टवेयर्स उनको चाहिए होते हैं. आप 100 कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टाइम में नहीं इंस्टॉल होता, बहुत टाइम लगता है. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक कंप्यूटर के अंदर पहला एक कंप्यूटर लेते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें जो हमें बिजनेस के लिए चाहिए वो हम इंस्टॉल कर देते हैं. We verify everything, we make sure everything is good, and then we create an image of that PC. और उस इमेज को हम replicate कर देते हैं on hundreds of PC. तो ताकि we have to do work once and then rest is all replication. That is called imaging. Clear and simple. Remote network installation जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, it's also called PXE. It's initiated boot, pre-execution environment. The workstation involved in the installation can retrieve the files from the network as opposed to DVD in their drive or attached USB. अभी मैंने आपको पिछले में बताया DVD या CD या DVD इन USB से हम Windows इंस्टॉल कर रहे थे. पर जो PXE जो है इट्स अ रिमोट नेटवर्क इंस्टॉलेशन. जैसे मैंने पहले बताया कि आप दूर this is also called an unattended installation because आप टेक्निकली उस कंप्यूटर के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है. ये रिमोट के थ्रू आप उसको पुश कर सकते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम, या पुल भी कर सकते हैं चाहे तो. दूसरे नेटवर्क से आप पुल भी कर सकते हैं. और जो बूटिंग होगी द कंप्यूटर जो जब आप टर्न ऑन करेंगे इट्स गोना बूट बेस्ड ऑफ द नेटवर्क, नॉट ऑफ द DVD or the USB. So that is what the PXE initiated boot means. Multi-boot installation. More than one operating system on one system. मतलब एक कंप्यूटर के अंदर आप चाहें तो 2 या 3 ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं. एक कंप्यूटर में आप डाल सकते हैं Windows 7, उसी में आप डाल सकते हैं Windows 8, उसी में डाल सकते हैं Windows 10. अगर आपके पास इतनी मेमोरी और इतनी हार्ड ड्राइव है, you can do that. Every time when you boot, it will give you an option कि आपको कौन से सिस्टम के अंदर जाना है. You choose that system and it will go into that system. This is an old way of doing this. पहले हम बहुत करते थे ऐसे because virtualization was not common back then. But अब तो virtualization आ गई है, so we don't do this as much.
यहाँ पे यही बोल रहे हैं यूजर चूजेस which one to run when you boot. आप इस कंट्रोल पैनल सिस्टम सेटिंग सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्लिक एडवांस जाएंगे सिस्टम सेटिंग अंडर सिस्टम स्टार्टअप चूज डिफॉल्ट ओएस. सो लेट्स ट्राई दिस. ओके, कहाँ गया अपना विंडोज 8. So we go back to control panel. Let's click on control panel. And then it says to go to system and security. System. No, I'm looking for system startup actually. Right here. Yeah, इनकी जो guide है थोड़ी it's not correct, but anyway, this is it. तो system properties में आप जाएं, go to the advanced tab and then you go to startup and recovery. अब देखें यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है सिस्टम स्टार्टअप हो तो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन करें हम. इसमें तो सिर्फ एक ही है तो ये एक ही दिखाएगा. अगर आप 7 डाल दें, 8 डाल दें, 10 डाल दें तो वो तीनों दिखाएगा. तो इसके अंदर वो आप डाल सकते हैं कि भाई एवरी टाइम ऑटोमेटिकली इस विंडोज़ के ऊपर उसको बूट कर देने का, या तो टाइम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो वो डायरेक्टली विंडोज़ 8 पे चला जाएगा. अगर मैं इसको चेक करता हूं तो 30 सेकंड के लिए वो मुझे लिस्ट दिखाएगा कि भाई आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, आपको कौन सा चूज करना है. सो दैट्स व्हाट दिस विल शो. ओके, so this is what the multi-boot operating systems are. Repair, installation, refresh, and restore. So Windows recovery environment, which is Windows RE options. Refreshing it keeps personal files. अच्छा, इसके अंदर 3 ऑप्शन है ना, रिफ्रेश, रीसेट और रीस्टोर. सो इसके अंदर से जो रिफ्रेश है, रिफ्रेशिंग keeps personal files and settings along with the default apps and those that you installed from the Windows Store. Refresh के अंदर वो सब रखता है, वो खाली ऑपरेटिंग सिस्टम को रिफ्रेश करता है. Resetting, which is a reset, a second option यहाँ पे, what that does is that resetting reinstall Windows and deletes all but the default apps, meaning that you will lose your personal files and settings. अगर आप reset कर देते हैं तो वो बेसिकली जो आपकी जो उसकी जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है वो रहने देगा, पर आपकी जो पर्सनल फाइल्स हैं और सेटिंग्स है वो लूज़ कर दोगे आप. और रीस्टोर के अंदर जो है, रीस्टोरिंग अलाउज यू टू जस्ट अनडू रीसेंट सिस्टम चेंजेस. ये रीस्टोर मैंने पिछले इसमें भी कवर किया था. रीस्टोरिंग जो है बेसिकली आपका सिस्टम पहले पुरानी वाली डेट से रीस्टोर कर देता है. और अगर आप सिस्टम प्रोटेक्शन में जाएंगे, ये देख रहे हैं आप सिस्टम रीस्टोर. अब ये सिस्टम रीस्टोर के अंदर इट शुड गिव मी सम डेट्स. देख रहे हैं 7:54 AM अभी हुए हैं. इसके हिसाब से 8:06 हुए हैं कि आई थिंक इसका टाइम थोड़ा ऑफ है. बट ये आई कैन रीस्टोर 6 मिनट पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम की पोजीशन थी. I can do that. Let's see इसके अंदर और हैं any other points of recovery. So basically what it's doing, it's looking for other points of recovery. As you can see, there's none. The reason why there's none is because we never set up for recovery. Otherwise यहाँ पे मुझे शो करता 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का टाइम, 3 हफ्ते का टाइम, जो भी, कि अगर if I want to revert back or if I want to restore my computer back to 1 week ago or 2 weeks ago, and I can just click on it and then I can restore it. And if you remember last time I had mentioned to you how this works is that it depends on how much storage you're providing to the system protection. उस बेस के हिसाब से वो restore points create करेगा. I'm only giving it, this is by default, I haven't made any changes, this is only a virtual machine, but as you can see it's only using 3%. 3% के अंदर it's not gonna give me a lot of data restore points. If I increase this
to like 46%, it's gonna give me maybe 2 weeks, 3 weeks worth of restore points. So that is what the system protection helps you with when it comes to the restore. Recovery partition. An area of the hard drive set aside to hold files that can be used to recover the operating system in the event of a failure. You can copy the information from this partition to another location, usually a USB drive, to use in the event that the partition fails. हार्ड ड्राइव जब हम पार्टीशन करते हैं, जब हम नया विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज़ 8 से भी इन्होंने स्टार्ट किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इट क्रिएट्स ए रिकवरी पार्टीशन, जो हम काफ़ी लोग they don't know about it, but it exists and I will show you that in a minute. वो जो रिकवरी का जो पार्टीशन होता है, you can recover part of your operating system off of that, and वो recovery Windows से नहीं होती है, वो recovery DOS से होती है. So let's see what they have. Okay, so let me show you. So वो हार्ड ड्राइव की हम रिकवरी कैसे देखेंगे? So you can go to this PC, you can click on manage, and you go to disk management. तो देख रहे हैं ये डिस्क 0 है, जो कि सी ड्राइव है, सी ड्राइव ये वाली, ठीक है ना. 49.6 GB इसकी टोटल स्पेस है, 36.9 GB फ्री स्पेस बाकी है इसमें. वही 49 GB आपको देखें यहाँ पे दिख रही है, 49.66 विच इज़ ए सी ड्राइव, ठीक है. जो आपको नहीं दिख रही है वो ये है सिस्टम रिजर्व्ड 350 GB MB, ठीक है. और ये हार्ड ड्राइव थोड़ी छोटी है, बट यू ऑल्सो सी एट द टाइम व्हेन यू क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर एक और आएगी ड्राइव, इसमें शो नहीं कर रही बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल ड्राइव एंड इट्स अ वर्चुअलाइज्ड मशीन. एक दूसरी भी ड्राइव आएगी विच विल ऑल्सो कॉल ए रिकवरी ड्राइव, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, विंडोज़ के दिस पीसी में आपको नहीं दिखेगी, बट इट इज़ रनिंग इन द बैकग्राउंड, जो कि यू कैन टेक अ लुक एट इट फ्रॉम हियर. सो आप अपने सिस्टम में जाइए, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 अगर आपके पास हो, द वे टू गेट टू दिस इज़ द सेम. आप कंप्यूटर में जाके डिस्क मैनेज पे क्लिक करें एंड डिस्क मैनेजमेंट विल शो यू दिस. और यू कैन ऑल्सो डू डिस्क पार्ट, विच मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, विच इज़ ऑन अ कमांड लाइन. Windows 8 boot methods. Boot कैसे होता है? और ये this applies to not just Windows 8, it applies to Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 as well. तो इंटरनल हार्ड ड्राइव के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें तो उससे वो बूट कर लेगा Windows 8. एक्सटर्नल या हॉट स्वैपेबल ड्राइव, वो भी आप उसके ऊपर भी बूट कर सकते हैं. जो फ्लैश ड्राइव है, छोटी सी होती है ना USB फ्लैश ड्राइव, उसको आपको सर्टेन फॉर्मेट के अंदर सर्टेन तरीके से फॉर्मेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर इट टू बी बूटेबल. बट फ्लैश ड्राइव के अंदर भी आप विंडोज़ 8 को बूट कर सकते हैं. solid state drive which is an SSD is the fastest way obviously to boot up the operating system. Netboot, it means booting up your Windows through a network, मीनिंग आप हार्ड ड्राइव के ऊपर विंडोज़ रन नहीं कर रहे हैं, आप नेटवर्क के थ्रू विंडोज़ की मेन फाइल्स को आप खींच रहे हैं एंड विंडोज़ उस नेटवर्क के ऊपर चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड ए नेटबूट. Now there is something called a system partition. System partition is the one that contains the boot. जो मैंने अभी पिछले दिखाया ना, this is कहाँ गया, system reserve. This has the bootable files in here, ठीक है. And folder that tells the computer where to look to start Windows.
सो वो जो सिस्टम रिजर्व फाइल फोल्डर है पार्टीशन, उसके अंदर वो सिस्टम को बताता है कि यहाँ पे सारी फाइल्स सेव हैं, इस फाइल को यूटिलाइज करें बूट करने के लिए. And then there's another something called boot partition, which can be the same as the same system partition, contains the actual files used to start Windows. It can also be called boot partition as well. Recovery partition includes recovery tools like Windows RE tools or a recovery image. Recovery partition जो है वो अलग से उसका partition दिखता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो इसमें नहीं दिख रहा because it's virtualized machine and there is no recovery turned on. बट उसी जगह पे डिस्क मैनेजमेंट में आपको आपके सिस्टम के अंदर एक रिकवरी का भी पार्टीशन दिखना चाहिए, एंड यू कैन टेस्ट इट. You should see more than one C drive. You should see C, D, and then probably you will see a recovery partition and a system reserved. So your system reserved and recovery partition, you're not going to see it in Windows My Computer, but it is running in the background. Now key boot files. ये जो files आपको दिख रही हैं, ये इनकी primary boot files हैं which are required to load the operating system. First is boot manager. It starts the loading of the OS. It's a bootstrap of the system. Boot manager जो है load करता है OS को. BCD also known as boot configuration data. ठीक है, boot configuration data which holds the information about OS installed on the computer such as the location of the OS files. इसके अंदर data उसका save हुआ होता है. Next is winload.exe. winload.exe जो है it loads the operating system kernel. Operating system जो kernel जो होता है ना, it's a main file, उसको load करता है to run the operating system. The NTOS kernel.exe or KRNL is the executable for the kernel, and वो उसको load करता है. That's how the kernel starts running. winresume.exe. winresume.exe is the system. If the system is not starting fresh but resuming a previous session, then winresume.exe is called by the boot manager. So usually winresume जो है when you are in a sleep mode or a hibernation mode, ये winresume.exe is kicked in. जैसे ही आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, जैसे ही आप अपना डेस्कटॉप के ऊपर वो बटन दबाते हैं फ्रॉम हाइबरनेशन और फ्रॉम स्लीप मोड, बूट मैनेजर जो है, रिमेंबर बूट मैनेजर का काम इज द फर्स्ट, उसका पहली जॉब यही है. बूट मैनेजर कॉल्स आउट अदर थिंग्स एंड देन बूट मैनेजर जो है winresume.exe को कॉल आउट करता है कि भाई वेयर डिड यू लेफ्ट ऑफ, start from there. So that is the function of winresume. Then we have system files which resides in the system directory. So for example, hal.dll, it's called hardware abstraction layer. Then we have SMSS, which is called a session manager. Then we have winlogon.exe, which is a user session. ये winlogon shows the user session. And then we have lsas.exe, which is a security subsystem. ये सारी इसकी जो primary system files है, if your operating system does not have this file or it's missing a file, your Windows will crash. It will not boot up. So these are the most basic required files to load the operating system. Windows to go, ये क्या है? Windows to go allow Windows 8.1 or 8 to be installed on any USB bootable device, flash drive, external hard drive, and so forth. An image of the OS is known as a workspace, and you can use BitLocker with WTG to secure the workspace. Windows on the go basically अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने. इसमें बेसिकली आप अपना विंडोज़ कैरी कर सकते हैं फ्लैश ड्राइव पे, यूएसबी पे या एसएसडी पे या कोई भी एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव होती है, आप उस पर कैरी कर सकते हैं, अपने जेब में डाल के लेके जा सकते हैं विंडोज़ को. जो आप
विंडोज उसको डालें and then you can start the Windows bootable the entire system. तो इसके अंदर प्रॉब्लम खाली ये आता है कि अगर समझे आपके उस विंडोज के अंदर आपके सिक्योर फाइल्स हैं एंड स्टफ, देन व्हाट डू यू डू विद दैट? सो दे आर टॉकिंग दैट you can encrypt that USB flash drive or external drive with a BitLocker. तो अगर चोरी भी हो जाती है then आपका सारा डेटा encrypt होगा, which means no one else can even open it. They will have the data but they're not gonna be able to open it. So in that case it will be useless. Netboot, the process of booting the OS from the network, जैसे कि मैंने पहले बताया. This can be done with Windows 8 using Microsoft Desktop Virtualization. Useful option for environments where hardware is kept to a minimum. अभी काफ़ी जो organizations हैं वो ज़्यादा they do not want to spend a lot of money on operating system or a hardware in a sense computers, because if they can save more money on these type of things, they can make more money. तो ये लोग what they do is that हर वो खाली you just get a system, you just get like a screen with like with a very tiny thin client. Let me show you what that is. So ये computers हैं. Intel NUC, this is very common. It's a thin client device. It's a size of a modem or your router or sometimes even smaller than that. तो ये कंप्यूटर है पूरा, ठीक है. और अमूमन इस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है. देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. आप बटन दबाएंगे, ऑन करेंगे तो वो नेटवर्क के थ्रू, इसके पीछे नेटवर्क का ये लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये नेटवर्क का जो ईथरनेट है इसके थ्रू वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क से उठाता है. और सारा दिन आप जितना भी काम करते हैं वो सब नेटवर्क के ऊपर होता है. इसका काम थिन क्लाइंट का बेसिकली ये है कि it just outputs any screen so you can see what you're doing, ठीक है. but there's no operating system. Sometimes on these there are, you can install, आप hard drive डाल दें इसके अंदर, then you can install the operating system. But if you want to go a cheaper way, you can always do net login or netboot, and you can just run the entire operating system off of the network. So this actually was a chapter number 15, which was a short chapter. If you guys like the video, if you have any questions, make sure to submit that in comments. And if you do like it, just make sure to like and subscribe.